Hello dear students, in this video lecture we have discussed another disorder of genetics which is known as color blindness. Okay, so what is color blindness? There is a two words is coming, that is one is the color and one is the blindness. So what do you mean by color? So different colors like red, green, yellow, these are the different type of colors. Blindness in Odia, blind means kon andha. So it is the one type of disorder by which a human or the human eye cannot distinguish the two colors, that is red and green, so that it is otherwise called as red green color blindness. Okay, so what is color blindness? It is the one type of disorder by which a person cannot distinguish the red green color blindness which was discovered. That means discovered means it is माने एटा नुह जे माने ए डिजीज ता हम देहर नथिला टोटली हमर पूरा पूरी नवारे डिस्कवर्ड है आम देहर थिला ह्यूमंस मान देहर ए डिजीज ता थिला बट कोन कराइछि से समय रे से जो साइंटिस्ट कोन कले ता ऊपर माने ता ऊपर किछि आईडिया बा ए प्रकार डिजीज मध्ये आम देहर अछि बोली से ताको बाहर करथिले तो कोन कहला इट इज ए रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एटा हला गुटे रेड आउ ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस दैट मींस the person will not distinguish the red color and green color. जो पर्सन को यही प्रकार डिजीज होइछि the person will not identify or distinguish the red and green color, and this disorder is introduced or discovered by Horner, Professor K. Horner, the Professor Horner in the year of 1876. Okay, so what is color blindness? Simply it is called it is a one type of disorder by which a person cannot distinguish red and green color, and this type of disorder was introduced by or discovered by Professor Dr. Horner in the year of 1876. Okay, next point, it is the most important one. It is a recessive sex-linked or X-linked disorder. What do you understand? It is a recessive. Recessive means the gene which will be attached to the chromosome have the recessive in nature, and due to it is attached to the sex chromosome, जेहेतु एटा हमरो बॉडी रो जो सेक्स क्रोमोसोम का अटैच होची, so that it is called as sex linked inheritance, or due to it will be attached to the X chromosome, जेहेतु ये कोन कोचे हमर X chromosome संगे अटैच होची, so that it is otherwise called as X linked disorder or X linked inheritance बोली मध्ये हम एटा को हमें कहि परिबा. तो कोन कहले पिले देखो मोस्ट इंपोर्टेंट वन, it is a recessive sex linked disorder because in our body XY for the male, XY for the male and XX for the female. Okay, due to in this case the X is the recessive, X कौन है हम recessive है, so that due to this type of disorder will be attached, that is we can taken as a C. सेटा को हम कोन करते जो ये डिजॉर्डर टाको हम सी हिसाब रिप्रेजेंट करते, जेहेतु ये कोन करते हमर रिसेसिव जीन संगे अटैच होचे, सो दैट एटा कोन बोली कहले हमें रिसेसिव डिजॉर्डर बोली कहले. एवं ड्यू टू इट विल बी अटैच टू द एक्स क्रोमोसोम, जेहेतु एटा कोन होचे जे कोन जो एक्स क्रोमोसोम संगे अटैच होचे, सेति पय बोली के एटा मध्ये अदरवाइज कॉल्ड बोली कोन बोली कोचे एक्स लिंक्ड डिजॉर्डर. Okay, I think you understand better. Okay, next one, the eye or the person who will be suffering from this type of disorder, the eye fails to distinguish. ये जो eye आखि fails माने determine करि पारे नाही, identify करि पारे नाही कोनटा which is red and green color. The eye हमर जो आखिडा, the eye fails to, एटा कोन होचे आखिडा हमर fails होचे
due to distinguish the red and green color. We have studied in the 11th class in our eye. There are different type of eye rods are there, and the main function is to identify or to distinguish the different type of colors. So in this case, the in our eye, the eye rods are not exactly not distinguish the red and green color due to the different type of mutation. जेहेतु mutation ହେଇଯିବା द्वारा कौन करि पानी हमर आखिटा कौन करि पानी दुईटी कलर को से आइडेंटिफाई करि पार नाही से दुईटी कलर हला रेड एंड ग्रीन कलर. If the person will not identify the red and green color, then we can call it this is a color blindness. Okay, next कौन कहला? It show the crisscross inheritance. What do you mean by crisscross inheritance? Crisscross inheritance माने किछि नाही. If suppose this is the main parent, if this is the main parent, let's think about one example is there. Okay, तो भाबो एटा दुईटी हला हमर मेन पेरेंट जणे हले xx आउट हले xy, that means एटा हला मेल पेरेंट एटा हला हमर फीमेल पेरेंट. जदि if the we can go for the different type of we can go for the different type of conditions, but for your example purpose, if the mother will be suffering, सुना बोलसे जदि मदर का सफरिंग होचंती सफर होची, then their all the children जति so either the son or the daughters will be suffer. If कहिछि कोन if जदि mother will be sufferer from the color blindness, but if the father will be sufferer from this type of disease, then the daughters are carrier. Daughters are कौन हेबे carrier हेबे. Some some sons are suffering from the color blindness and some sons are normal. We can do the different type of conditions for which, but what is crisscross inheritance? This is nothing but the crisscross inheritance. Cross means if the main parents, the mother will be suffering, then the disorder will be goes to your grandson. Taro grandson pakujiva, but the F1 generation will not be sufferer. If the father will be suffering, then their daughters or grandsons will be sufferer. We can do the different type of conditions. Let's think about, and the chances of this type of disorder, age or type of disorder chances more than in case of male. That is approximately 8%. केते हमरो ए जो रोग हबार माने ए जो डिजीज हबार डिसऑर्डर हबार चांसेस ता फॉर द मेल मानन को एटा रहउची हमर पाखा पाखी 8%. काहे कि सर? बिकॉज़ मेल आर हेटेरोगेमेटिक इन नेचर and they have only X chromosome and it is a recessive sex linked disorder. So जेहेतु एटार कोन होची गोटे X chromosome रहउची and Y is the dominant, Y टा कोन करची dominant करची, so that X टा हमर कोन रहउची recessive रहउची. तो जेहेतु ये रिसेसिव रोचे सेति पय बोली मेल मानकर चांसेस कोन अछि अधिका, दैट इज approximately 8%, and in case of female it is very rare or very less amount, that is 0.4%. देखो मात्र 0.4% चांसेस अछि हमर कार फीमेल माने ए रोग रे सफरिंग होबार. नेक्स्ट, ओके, दिस इज द इंपोर्टेंट वन and it will be coming to your needs and zipper examination. That is, if a person will be suffering from red color blindness or the person will not detect the red color, exactly red color जैसे detect करि पार नाही, then it is called proteronomia, and if the green color will not detect, then it is called deuteranopia. Okay, so it is किन सर मन रखिबा mountain dew. Mountain dew is a hill, and the person will be suffering from the green color blindness, or the person will not detect the green color, then it is called deuteropenia. Green color pahad. So एटा को हम से हिसाब रे एग्जांपल रे मध्ये मन रखि दे परिबा. Next is the person will be suffering from red color, then it is called as proteronopia. Now what is the condition for this? देखो पहले condition कोन कहला? Due to it is a recessive sex linked disorder, so the condition is that the XY having the normal
having the normal male, and if the disorder, that is the C or the genetics will be attached, gene will be attached to the X chromosome, then the male will be called as color blindness male. एटा हम कोन बोली कहबा color blind male. That means the person will be suffering from color blindness. Next, if the female are in general homogametic in nature and if they carry two normal X chromosome, then the person will be normal female. बोल से बुझो. Next, if the gene will be attached to the only one X chromosome, जदि गोटे X chromosome संगे लागिछि, then the female will be carrier, but the female will identify the red and green color. बुझि पालो कोन कहली? जदि एई जो क्रोमोसोम जीन ता जदि हमर जो कलर ब्लाइंडनेस जदि म्यूटेशन एई गोटे हमर रिसेसिव जीन संगे रहुछि, because another X chromosome will be dominant to this chromosome. बुझि पालो ना? एई क्रोमोसोम ता कोन कला ताको डोमिनेट कर देला, सेति पई आर कैरेक्टर ता शो कला नाही, बट ता देहरे रही अछि. That means the person or the female or the daughter will be the carrier, but she will be easily identify the red and green color. तो एटा कोन बोली कोचा हमें कैरियर फीमेल बोलबा कैरियर फीमेल. But the third case is that if both the chromosomes are attached to the same disorder, that is XC and XC, then the female will be color blindness female. ताहले सेतळे हमें ता कोन बोली कहबा color blindness female बोली हमें कहबा. Now we have go for this some conditions or some different type of crisscross we can do. Okay students, now look at this. Condition number 1. What is the condition? If a carrier woman female or woman can marry with a normal male, then what are the possibility or what are the probability? Because the carrier female carrying the only one defective X chromosome, when they will be married with a normal male that can carry XY chromosome, then what is the possibility? এই কেস রে हमर पॉसिबिलिटी कोन हबरे पिले देखो तो कोन कहला तो এই केस रे कोन होचे हमर फीमेल टा कोन अछि कैरियर अछि XCX and the normal male, then the probability is XCX XCY normal male female and normal. So what we can get from this condition? If a carrier female marry with a normal male having XY chromosome, then they देखो one daughter, ये जो daughter टा हमर कोन हला carrier हला carrier daughter. Okay, this is the color blindness. Son. This is the normal son. That means he can easily identify the color. Here it is a normal daughter. Okay. So what you can get here? We can get daughters are normal because this is carrier, but she can easily identify the red and green color.
So according to phenotype ratio, जदि आमे phenotype ratio अनुसार जिबा, according to if we go for the phenotype ratio, then the 50% daughter will normal, and 25% of son have color blindness, and again 25% माने देख रे बेले एई जो दुईटी डॉक्टर गला ये जने कैरियर रहला जो नॉर्मल रहला तो एटा गला टोटल 50%, आउ जो दी जणरू कोन हला 25% माने जने कोन हला कलर ब्लाइंडनेस हला आउ जने कोन हला नॉर्मल हला, तो अनदर 25% ऑफ सन हैव नॉर्मल। बा तुम एटा कोन को लिख परियो फ्रॉम दिस आई वी कैन गेट वन कैरियर डॉटर, one normal daughter, one normal son, and one color blindness son। तो फर्स्ट कंडीशन रे कोन गला, इफ ए कैरियर फीमेल जदि गोटे कैरियर फीमेल गोटे नॉर्मल मेल को मैरिज करूची ताहले दिस इज द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट कंडीशन इज नॉर्मल वुमेन। द सेकंड कंडीशन नंबर 2, normal female, when a normal woman married to a colorblind male, then what are the possibility? देखो कौन कहला normal female, that means they have carrying XX chromosome, and the colorblind man have the XY, then what are the possibility? Okay, exactly this is called the criss-cross mechanism। तो criss-cross in it देखो exactly it बुझो, if a normal female marries to a colorblind male, जदि गोटे colorblind male से marriage करूचंदी, then all the son and daughters are normal according to phenotype। कौन कहला देखो दुईटी डॉटर जो आसिले हमर द डॉटर्स आर कैरियर बट दे विल बी इजीली आइडेंटिफाई द रेड एंड ग्रीन कलर। एमाने कैरियर माने आंको देहरे रोगोटा माने डिजॉर्डरटा रही अछि बट एमाने सफरिंग होनंदी, माने एमाने आइडेंटिफाई इजीली करि पाछंती, एमान रेड एंड ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करि पाछंती। तो जेतबळे की जो कैरियर वुमेन टू बा कैरियर डॉटर टू जेतबळे तारो आइदर सन एंड डॉटर होती, दैट मींस द इट मेन पेरेंट, दिस इज द F1 जनरेशन। F2 generation रे कोन अछि, there will be chances of suffering, so this is exactly called as criss-cross mechanism। माने एई केस रे कोन हेला फादर को कलर ब्लाइंडनेस अछि बट एमानकर जो सन एंड डॉटर जागा देखो सन जा कोन हेले नॉर्मल आसले, बुझि पाछो, डॉटर्स मध्ये कोन हला हमर नॉर्मल का नॉर्मल हम कहबे कैरियर एक्जेक्टली जदि हम कहला कैरियर बट दे कैन इजीली आइडेंटिफाई द रेड एंड ग्रीन कलर। तो एठी हमें व्हाट वी कैन गेट, दिस इज द कैरियर daughter, again this is carrier daughter, normal son and normal son। So what we can get here, we can get 50% of carrier daughter and again 50% of normal son। तो एठी हमें कोन पाइले 50% हमें कैरियर डॉटर पाइले, 50% हमें कोन पाइजे नॉर्मल सन पाइजे। दिस इज द कंडीशन नंबर 2। ओके, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट अनदर कंडीशन।
That is the condition number 3. And here, if a color blind female, if a color blind female having XC and XC chromosome marries with a normal male having XY chromosome, what are the possibility? देखो जेहेतु एटा कोन कहितला जे हमर रिसेसिव जीन डिसऑर्डर बोली कहितला तमे भाबी दो कन्फर्म हे जाइछु जेहेतु मदर दा सफरिंग होचे एवं मदर जेहेतु दिगा क्रोमोसोम हमर कोन होचंदी डिफेक्टिव रछंदी तो ताकर जेतिकी भी हमर कोन हेबे डॉटर हो बा सन प्रोड्यूस हेबे सफरिंग हेबे देखि दियो कोन होची XY with color blindness female देखो कौन होची XC X that means the daughter will be कौन कैरियर ता देहरे अछि but suffering हो नाही again रिसेसिव डिसऑर्डर बोली कहला ना जेहेतु एटा कोन बोली कहला जे रिसेसिव डिसऑर्डर बोली कहला डॉक्टर जा कोन हले माने देहरे से जो डिसऑर्डर ता रही अछि बट से माने सफरिंग हो ना दे बट ऑल द सन्स will be color blind. देखि पालो दिटा ऑप्शन so what we can get here 50% of daughter are carrier and 50% of son are color blindness suffering from color blindness तो एइठु हम जानले जे जदि गोटे मदर गोटे हमर कोन होचे सफर रे रहूची तार जदि हमर जेहेतु से गोटे होमोगेमेटिक जदि तार दुटा क्रोमोसोम जदि डिफेक्टिव जदि म्यूटेशन हेची जीन म्यूटेशन ता ताहले तार जेतिकी सब हमर कोन होचंदी सन प्रोड्यूस होचंदी स्पेशली इन केस ऑफ सन तो एइटा कोन होची हमर डिफेक्टिव कोच तो एइ जो दुटा कोन हले कलर ब्लाइंडनेस सन हियर कैरियर female or carrier daughter and this is the carrier daughter बुझबाला तो 50% daughter दीटा daughter कोन आसले 50% carrier हले आउ जो दीटा son रहिले से माने color blindness रे suffering हले this is the third condition the last condition is the condition number 4 here we can take carrier female when a carrier female marries to a color blindness male having XY chromosome then what are the possibility XCY XCX also that if a carrier female that have carrying XCX that means the one chromosome will be defective carrying that gene okay next the male will be the color blindness then the first case here the daughter is the color blindness that means color blind daughter color blind daughter as like XC that means the both the chromosome are having the defective gene and the one daughter will be carrier one son will be sufferer gote son madhya kon hala amar suffering hochi next another one is the normal so eta kon hala color blind son ये kon hala carrier woman but se normal का जेहेतु ता देहर कोन कैरियर से तो इजीली आइडेंटिफाई कर परछ हम नॉर्मल मध्ये कोइ परिया फिनोटाइप रेशियो अनुसार नबा तो हियर वी कैन गेट 50% of 50 देखो 1 2 50% of daughter and son गोटे पो गोटे झियो 50% are color blind and 50% are normal
तो जदि एटा तुम 50% नॉर्मल लिखुछ एटा करो 25% आड 25% डॉटर career and 25% son normal. This is all about your color blindness. Okay, तो एटा हला गोटे टाइप रा हमर डिसऑर्डर और एटा हमें मध्य कहि परिबा एक्स लिंक डिसऑर्डर और सेक्स लिंक डिसऑर्डर. तो लाइक हेमियोफिलिया इज आल्सो ए सेक्स लिंक डिसऑर्डर थिला. रिमेंबर इट, मन पका हला नै. सो मु तो कहिबी जनरली इज अ कलर ब्लाइंडनेस और हेमियोफिलिया दी जाक हम सेक्स लिंक डिसऑर्डर बोली कहूचे एवं एटा माने इजी मन रखिबो जिंदगी ये जो दीटा गोटे कैटेगरी जाउछनी आ बाकी जो सिंड्रोम जा रहला से मान जाउछन जे डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ए सब जा गोटे जाउछन. तो ए दीटा गोटे वन टाइप कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमियोफिलिया एंड दिस अदर थ्री दैट इज द डाउन सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम सेटा गोटे कैटेगरी गले. तो से गला ऑटोसोमल डिसऑर्डर एडा हमें कोन बोले कहते सेक्स लिंक डिसऑर्डर. तो एडा कोन होते सेक्स संगे लिंक है कि जीन म्यूटेशन होछ. तो एटा आम दी भाई बा दी भौणी बोली कहीदे पारिबा हेमियोफिलिया बा कलर ब्लाइंडनेस को तुम जो प्रकार मन रखुछ रख. दिस इज ऑल अबाउट योर कलर ब्लाइंडनेस रिलेटेड. थैंक यू.